Women in France. We would like to study this topic under two headings: before the revolution and after the revolution. Before the revolution, most of the women of third estate had to work to earn their living, but they did petty jobs like working in laundry, selling flowers and vegetables, and also as maid servants. थर्ड स्टेट के जो पुअर वुमेन थी उनको काम करना पड़ता था, लेकिन वो छोटे मोटे काम करते थे। छोटे मोटे काम जैसे लॉन्ड्री में काम करना, फूल या सब्जियां बेचना, या फिर एज मेड सर्वेंट। द वुमेन ऑफ थर्ड स्टेट डिड नॉट गेट एजुकेशन और जॉब ट्रेनिंग। जो थर्ड स्टेट की वुमेन थी उनको ना ही किसी प्रकार का एजुकेशन दिया जाता था और ना ही वो जॉब ट्रेनिंग पा सकती थी। ओनली द डॉटर्स ऑफ द नोबल्स एंड वेल्दियर मेंबर्स ऑफ थर्ड स्टेट could study at convent, after which their families arranged marriage for them. जो एजुकेशन किसको दिया जाता था? ओनली नोबल्स एंड the wealthier members of the third state, their daughters could study at convent. But here also one important thing: these girls were not allowed to do any kind of job. After their education was over, they had to marry according to the wish of their family members. Working women not only earned money but also did the household work. ये जो थर्ड स्टेट की वुमेन थी, जो पैसा कमाती थी, जो काम करती थी, उनको ना सिर्फ घर का पैसा कमाना पड़ता था बल्कि उनको घर के सारे काम भी करने पड़ते थे। दैट वॉज द कंडीशन ऑफ वुमेन बिफोर द रेवोल्यूशन। Nothing much changed after the revolution if you think of the condition of women, except few changes. After the revolution, schooling was made compulsory for all girls. अब रेवोल्यूशन के बाद हर लड़की के लिए स्कूलिंग कंपलसरी हो गया। Their fathers could no longer force them into marriage against their will. अब उनकी मर्जी के खिलाफ उन्हें शादी के लिए फोर्स नहीं किया जा सकता था। Marriage was made a legal contract and divorce was made legal and could be applied both by men and women. अब डिवोर्स लीगल हो गया था और उसको मेन और वुमेन दोनों ही अप्लाई कर सकती थी। वुमेन कुड नाउ ट्रेन फॉर जॉब्स। अब वुमेन जो है जॉब ट्रेनिंग पा सकती थी। Our next topic is slave trade. Before we start, let us understand what is slave trade. The procuring, transporting and selling of human beings as slaves by the European countries is known as slave trade. In simple words, slave trade means buying and selling of slaves. सीधे सादी आम बोलचाल की भाषा में स्लेव ट्रेड से हम क्या समझेंगे? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग्स एज अ स्लेव्स। इंसानों को खरीदना और बेचना, स्लेव के लिए, गुलाम बनाने के लिए जब इंसानों को बेचा और खरीदा गया वो था स्लेव ट्रेड। सो देयर वाज अ ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड बिटवीन यूरोप, अफ्रीका एंड अमेरिका। ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड था यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका के बीच में। यूरोपियन पीपल क्या करते? अफ्रीका में जाते और अफ्रीका में जाके अफ्रीकन लोगों को एज ए स्लेव खरीदते और उनको अमेरिका और कैरेबियन कॉलोनीज में लेके जाया जाता, एज ए स्लेव वहाँ पे काम करवाया जाता। सो देयर वाज ए ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड बिटवीन यूरोप, अफ्रीका एंड अमेरिका। Now let us understand why the slave trade started in France. The slave trade began in 17th century. 17th century में slave trade शुरू हुआ. The colonies in the Caribbean were important suppliers of commodities such as tobacco, indigo, sugar and coffee. But the reluctance of the Europeans to go to a distant and unfamiliar land
led to a shortage of labor on the plantations. So, this was met by a triangular slave trade between Europe, Africa and America. ये जो कॉलोनीज थे कैरेबियन में वो सप्लाई करते थे कमोडिटी जैसे टोबैको, इंडिगो, शुगर, कॉफ़ी, लेकिन ये इतने दूर थे कि यहाँ पे यूरोपियंस इतने दूर दूसरे कॉन्टिनेंट में जाके कोई भी यूरोपियन अनफेमिलियर लैंड में काम करने को तैयार नहीं था. नतीजा क्या हुआ? शॉर्टेज ऑफ लेबर. लेबर की शॉर्टेज हो गई. अब इस शॉर्टेज को कैसे पूरा किया गया? दिस वॉज मेट बाय ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड बिटवीन यूरोप, अफ्रीका एंड अमेरिका. इस लेबर शॉर्टेज को पूरा किया गया एक ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड के माध्यम से बिटवीन यूरोप, अफ्रीका एंड अमेरिका. Bordeaux and Nantes were two port cities of France famous for slave trade. ये जो दो port cities थे Bordeaux और Nantes, they were very very rich and prosperous region. But how did it achieve its prosperity? Because of slave trade. These two port cities were famous and prosperous because of slave trade. Now let us understand how the slaves were taken from one place to another. इन slaves को किस प्रकार से अफ्रीका से इतने दूर अमेरिका और कैरेबियन कॉलोनीज में ले जाया जाता. French merchants sailed from the ports of Bordeaux and Nantes to the African coast, where they bought slaves from the local chieftains. These slaves were packed tightly in ships for a 3-month voyage across the Atlantic to the Caribbean. You can see in the picture, ये slave जो थे इनको बोर्डुएक्स और नैंटस से जो यूरोपियन मर्चेंट्स थे वो अफ्रीका पहुँचते, वहाँ से इन स्लेव्स को खरीदा जाता, खरीद के शिप में टाइटली पैक करके, ये पिक्चर में आप देख सकते हैं, भर के जैसे लोग सामान को पैक करते हैं ठूस के, वैसे ही इन इंसानों को, गुलामों को खरीद दिया जाता था. खरीदने के बाद उनको शिप पे ठूस के बैठा दिया जाता था और 3 महीने तक उनको ट्रैवल करना पड़ता था. दे हैड टू क्रॉस द अटलांटिक ओशन टू रीच द कैरेबियन. Can you just imagine how pathetic the condition of the slaves was at that time? So this was how the slaves were taken from one place to another. They were tightly packed in ships for a 3-month voyage across Atlantic to the Caribbean. Now only discussion but no step taken to abolish slave trade. ये जो नेशनल असेंबली थी, द नेशनल असेंबली हैड लॉन्ग डिबेट्स टू एबॉलिश स्लेव ट्रेड, बट it did not pass any laws fearing opposition from the businessmen whose income depended on slave trade. ये नेशनल असेंबली सिर्फ डिस्कशन करती थी कि स्लेव ट्रेड को एबॉलिश करना है, लेकिन उसने कभी भी इस स्लेव ट्रेड को एबॉलिश नहीं किया. कोई लॉ उसने पास नहीं किया इस स्लेव ट्रेड को एबॉलिश करने के लिए नेशनल असेंबली ने. क्यों? क्योंकि वो डरते थे कि जो बिजनेसमैन जो थे, जो स्लेव ट्रेड के ऊपर डिपेंडेंट थे, उनका जो पैसा, उनका प्रॉस्पेरिटी सब कुछ स्लेव ट्रेड के ऊपर डिपेंडेंट था, उनका सपोर्ट उनसे नेशनल असेंबली से चला जाएगा. दैट इज़ वाई द नेशनल असेंबली डिड नॉट टेक एनी स्टेप टू एबॉलिश स्लेव ट्रेड. Now, abolition of slave trade. It was finally the convention in 1794 legislated to free all slaves. But this was only for a short duration. 10 years later, Napoleon reintroduced slavery. Slavery was finally abolished in the French colonies in 1848. Finally, convention. Convention means during the rule of Robespierre, when France became republic, it was decided to free all the slaves, but it was for a short duration. अभी हमने पढ़ा था कि Robespierre could rule only for 1 year, between 1793 to July 1794. Then he was guillotined. So the abolition of slave trade introduced by convention was for a short duration. 10 years later, when again Napoleon reintroduced slavery.
Slavery was finally abolished in French colonies in 1848. फ्रेंच कॉलोनीज में स्लेवरी को फाइनली 1848 में अबॉलिश किया गया.